Sir. So good morning all. I'm sharing my screen. So what we have done yesterday was the timing and timing diagram of 8085 that is to be continued today also, and we will just refresh what we have done yesterday, and then we will continue with the new things, right? So these were the timing diagrams that we are expecting to take. That opcode fetch cycle requires 4 timing clock pulses, and memory read cycle requires 3 clock pulses. Memory write, input output read cycle, input output write cycle, they all require 3T. Interrupt acknowledge requires 6T or 12T depending on the interrupts, right? So these were the timing clock pulses. What is timing diagram? I have told you timing diagram is a graphical representation where each timing diagram represents the execution time taken by each instruction in a graphical format, right? क्या क्या होने वाला है अंदर वो बताने का काम करता है ये timing diagram. The execution time is represented in T states, that is 1 clock pulse, right? उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था the block diagram of 8085 is like here. So you all understood what is the block diagram of 8085, and in which we are having some registers in that. We can use those register pairs. Then we have this instruction register and instruction decoder and machine cycle encoding, and the timing and control unit, which is supposed to be the brain. Now this is going to generate the signals, and here if you are able to see S0, S1 and input output memory bar. So these are the control signals which are being generated by this timing and control unit, right? And these are like this. So we are having input output memory bar S1 and S0. This S2 is nothing, no, this is S2 is not there. This is incorrectly written. This is S0. So when this states comes, we have all as 000. The data bus stops working, and that is halt. Then we have 001 where we are expecting the memory to be written, right? So whenever the data is to be stored in the memory, we use this signal 001. 010 is for memory read. 1 is stands for that input output devices, and a letter other than that 01 stands for input output write, and again 110 which means input output read. And the next one is 011, which implies that the opcode is to be fetched. So input output memory bar S1 and S0 if they are 011. So 0 stands for memory related instruction, and S1 and S2 are 11. It implies that the opcode is to be fetched, right? And last one is the 111, which is the interrupt acknowledgement. So this is all instruction cycles, machine cycles, and these are the T states that I have told you. It starts from the falling edge and it ends at the rising edge, right? तो जहां खत्म होती है that complete cycle is called as a T state. अभी तक हम लोग इसको बोल रहे थे clock pulse, right? एक single clock pulse, और अब हम उसको बोलने वाले T pulses, T state, sorry. Then we have a time period, capital T, and that is equal to 1 by F. So you can calculate the frequency also from there. So frequency is the internal clock frequency uh, of microprocessor, right? So this was the T state. Then we are having machine cycles of 8085. They are broadly divided into 5 basic machine cycles. One is opcode fetch, which requires 4 T states. Memory read cycle, which requires 3 states. Memory write, input output write, read, input output write. They all require 3 T states, right? This is what we have completed. The processor takes a definite time to execute the machine cycles, right? The time taken by the processor to execute a machine cycle is expressed in T states. T states means 1 clock pulse, right? And 1 T state is equal to the time period of the internal clock signal of the processor. The T state starts from at the falling edge of a clock pulse. And this was the what we have done, that is opcode fetch machine cycle of 8085, in which we have studied that if there are the T1, T2 and T3, T4 are the T states or the clock pulses, which we have shown over here. So this is the clock, the first row in which the clock pulses is shown, and in the second row it is showing the a higher order address base that starts from A8 to A15. So that is the higher order memory address, and then we have AD0 to AD7. Now these are being multiplexed, so sometimes it has been used for
the address, and sometimes it has been used for data. So initially in the first timing clock pulse, 80 to 87 is going to use as a lower order address bus. So lower order address bus is being activated over here, and if you are able to see, which is controlled by the address latch enable. So address latch enable is high in the first clock pulse, which implies that now this 80 to 87 line bus is going to be used as the lower order address of the memory location, right? And after that, after the first clock pulse, it goes low, which implies that now that is being again used for the data. So data is going to be transferred over there. Now in the next row, you are able to see the control signal, that is input output memory bar oblique S1 S0, right? So input output memory bar should be 0, S1 should be 1, and S0 should be also 1. So if both are 1, implies that it is going to be fetch the opcode. Opcode means operational code or the instruction that is we are writing in the program. So for every of the instruction, the first fetch cycle, there is a first fetch cycle which is going to fetch the opcode from the memory location where we are writing, we are supposed to write the program, right? So this is over there, and if you are able to see from T2, means in the second clock pulse, there is a arrow which implies that the read signal is now low, and it is showing that the data is to be read from the memory location or from that location where we have written the program. So opcode is being fetched from that memory location. So that address is all initially given, and in the second T state, we are writing that opcode or the data on the data bus, and that is being taken to the microprocessor or the instruction register, and it requires the fourth T state to decode that signal. So in all, the opcode fetch machine cycle requires 4 T states, right? So this was explained over there. So each instruction of the processor has a 1 byte opcode. Yes, that I have already told you. We will be working on this. कितने byte का instruction रहता है, ये भी हम लोग बात करने वाले. The opcodes are stored in the memory, so the processor executes the opcode fetch machine cycle to fetch the opcode from memory, right? Hence every instruction starts with the opcode fetch. यानी सब के सब इंस्ट्रक्शंस जो चालू होते हैं, सबसे पहले ये 4 टी स्टेट्स ही लगेंगे जिसमें ऑपकोड फेच करने वाला है, राइट? ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और बाद में फिर आपको जो लगते हैं टी स्टेट्स कितने लगने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन या क्या करना है उसके हिसाब से. नाउ मेमोरी रीड मशीन साइकिल, दिस इज अदर देन द ऑपकोड फेच. यानी ऑपकोड फेच के बाद अगर आप चाहते हो कि हमारा डेटा जो है वो रीड करना है फ्रॉम दैट मेमोरी लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ say there is a program which we have written earlier, that is say MVI A03, that is 3E03. So 3E is the opcode fetch हो गया, instruction decode हो गया. अब वो जो 03 है, that is to be loaded, that is stored in the memory location, and that is to be loaded in the accumulator. Now in this situation, what will happen? The memory read machine cycle will come into play, and this is shown by his 3T states, right? So clock pulses are going continuously. They are shown in the first row. Second row shows you the higher order address bus. Third row shows you the lower order address data bus, which can be used, which is multiplex, which can be used for data as well as address. So initially it is used for the address, means the next memory location, and address latch enable is enabled, which implies that in the T1 state, the lower order address is going to be given by this address data line, right? So ये आ गया है. फिर इसके बाद input output memory oblique S1 and S0, ये control signal this is generated by the timing and control unit. तो अभी आप यहाँ देखो, input output memory bar is 0, which implies that it is related to memory, and S1 equal to 0 and S0 equal to 0, which implies that it is to read the data from the memory location, right? So आप यहाँ पर देखिए, read जो signal है, that becomes low, and if you are able to see these two arrows in duration of sorry in this duration,
the data is being put on the data line and they are being taken on the in the memory register, right? So the data is being copied from the memory and it is being stored in the place where we want to store it. Like we are going to store in the accumulator. So the data is being taken on the data bus and that is being loaded in the microprocessor and it is stored in the accumulator first, right? So this has been the example for the memory read machine cycle of 8085, right? Next, the what is the data that is to be that is expected to be written while you are performing your exams? So the memory read machine cycle is executed by the processor to read a data byte from the memory. Yes, as I told you, this is only to read the data byte, data, that is 03, which we have written in the program. So 03 is to be taken from that memory location to the accumulator, right? So data is to be written over there. So that is being taken by this. The processor takes three t states to execute this cycle. मतलब इसको 3 timing clock pulses लगेंगे. The instruction which have more than 1 byte word size will use the machine cycle after the opcode fetch machine cycle, right? जिनको एक बाइट से ज्यादा साइज का है उसके लिए ऑपकोड फेच के बाद ही हम लोग मशीन साइकिल यूज करेंगे ये रीड करने के, राइट? तो ये था. अभी कोई प्रॉब्लम है तो कोई पूछ सकता है. सेकेंड वन इज मेमोरी रीड मशीन साइकिल. ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है. इसके बाद है मेमोरी राइट मशीन साइकिल. इसको भी कितने लगते हैं? दिस ऑल्सो रिक्वायर्स 3T स्टेप्स, राइट? ना अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग डेटा जो है वो कहाँ पे राइट करने वाले हैं? मेमोरी में राइट करने वाले, राइट? दिस इज द एक्चुअल बेसिक फॉर द मेमोरी राइट मशीन साइकिल ऑफ 8085. तो ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, राइट? फिर इसके बाद the processor takes three T states to execute this machine cycle. ये हमने बताया. फिर input output read cycle is executed by the processor to read a data byte from input output port or from peripheral devices. अब जब हम लोगों को input output से input out devices से जब हमको डेटा रीड करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने कीबोर्ड लगाया है, कीबोर्ड में एक स्विच ऑन हुआ है या स्विच प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने का है. तब उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं? द डेटा इज टू बी रेड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट? तो वो डेटा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइसेस का कैसा होगा? आउटपुट डिवाइसेस का अगर मान लो मुझे एलईडी ऑन करना है तो मुझे यहाँ से डेटा बाहर भेजना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. द प्रोसेसर टेक्स थ्री टी स्टेज अगेन टू एग्जीक्यूट दिस मशीन साइकिल. यानी जब भी हम लोगों को डेटा इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट के लिए लगेगा तो कितने टी स्टेट्स लगेंगे? 3 स्टेट्स लगेंगे या 3 क्लॉक पल्स. नाउ दिस इज हाउ द इनपुट आउटपुट रीड साइकिल इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट, आफ्टर ऑपकोड फेच. तो इनपुट आउटपुट रीड साइकिल के लिए अगेन वी विल बी रिक्वायरिंग 3 क्लॉक पल्सेस जो यहाँ पर दिखाई हुई है, T1, T2 और T3. उसके बाद A8 to A15 ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है. नाउ ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे क्या जाएगा? इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जाएगा. अभी तक किसका जा रहा था? मेमोरी का जा रहा था, राइट? तो अभी किसका जाएगा? हायर ऑर्डर इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस. नाउ व्हाट इज अ पोर्ट? पोर्ट जो होता है, पोर्ट हमारा डेटा बाहर ले जाने के या अंदर लाने के काम का होता है. जैसे कि हमने हमारे यहाँ पर बंदरगाह होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको बंदर. बंदर बोला तो क्या? जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनल पोर्ट्स, राइट? हम लोग जैसे बोलते हैं एयरपोर्ट्स, राइट? व्हाट इट इंप्लाइज? दैट फ्रॉम वेयर द डेटा और फ्रॉम वेयर समथिंग इज सपोज टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. सिमिलरली यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट पोर्ट है. इनपुट आउटपुट पोर्ट का हमको एड्रेस देना है कि किस पोर्ट से वो डेटा जाने वाला है. कलकत्ता से जाने वाला है, दिल्ली से जाने वाला है या मुंबई से जाने वाला, राइट? तो वो एड्रेस हमको यहाँ पे देना पड़ेगा. वो भी 16 बिट का रहेगा. और इसमें क्या होता है? इसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो होता है इनपुट आउटपुट इसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, दैट इज अगेन टेकन बाय A8 to A15 और AD0 to AD7
टेक्स केयर ऑफ द लोअर ऑर्डर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एड्रेस, राइट। तो यहाँ पर ये सेम है, सिर्फ यहाँ पर मेमोरी के बजाय अब क्या आ गया है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। एड्रेस लैच एनेबल फिर से एनेबल हो गया। क्यों एनेबल हुआ? क्योंकि हमारा जो एड्रेस डेटा बस है अब वो एड्रेस लेकर जाने वाला है, इसीलिए हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पे हुआ। इसके बाद रीड सिग्नल फिर से हमारा लो हो जाएगा, क्योंकि अब डेटा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हमको रीड करना है, राइट। तो रीड के लिए हमारा टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का रीड का सिग्नल लो हो जाएगा। व्हेन इट गोज लो, द डेटा इज taken on the data bus and it is being read from the input output devices. You are able to see that if here the control signal, that is input output oblique memory bar, is equal to 1, which implies that it is related to input output devices. S1 is 1 and S0 is 0. So whenever we are having this signal 1 1 0 implies that we have to read the data from the input output devices. So this was the timing diagram for the read cycle of input output devices for 8085. Like, so the input output write machine cycle again, acha, this was for read, this was for read cycle, and now for the next, that is input output write cycle, same is the condition that we have to write. So इन दिस केस रीड के बजाय क्या हो जाएगा, राइट सिग्नल जो है, राइट डेटा जो है वो लो हो जाएगा, राइट। बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था कि इनपुट आउटपुट मेमोरी बार S1 S0 का जो सिग्नल है वो 1 है, S1 0 S0 1 ये आ गया है, इसके वजह से। और राइट सिग्नल जो है, राइट सिग्नल अब लो हुआ है। राइट सिग्नल लो हुआ मतलब अब डेटा जो है दैट इज टू बी एक्सपोर्टेड, यानी डेटा जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में लिखना है हमको, राइट। तो ये जो कंडीशन है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार S1 और S0, दिस कंट्रोल्स द सिग्नल। वैसे ही A8 और A15 अब फिर से कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, वो पोर्ट का एड्रेस जहां पर हायर ऑर्डर पोर्ट का एड्रेस जहां पर हमको डेटा जो है वो लिखना है, राइट। और AD0 टू AD7 क्या काम कर रहे हैं, AD0 AD7 लोअर ऑर्डर एड्रेस लेकर जा रहे हैं पहले क्लॉक पल्स में, और बाद में वो के लिए यूज हो रहे हैं, डेटा के लिए यूज हो रहे हैं। तो वो डेटा वहां से आपको इंपोर्ट करना है, राइट। सो दिस इज देयर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ऑफ इंस्ट्रक्शन MVI B43। जैसे हम लोगों ने MVI A03 लिखा था, वैसा अब MVI B43 क्या करना है हमारे को। MVI B43 मतलब मूव इमीडिएटली द डेटा ऑफ रजिस्टर B, और सॉरी ऑफ इमीडिएटली द डेटा टू द जनरल पर्पस रजिस्टर B। तो वो जो भी डेटा हम लोग लिख रहे हैं वो डेटा हमको कहाँ स्टोर करना है, हमको स्टोर करना है रजिस्टर B में, राइट। तो उसके लिए जो सबसे पहला, जब क्लॉक पल्स चालू होगा, जब प्रोग्राम शुरू होगा, तो सबसे पहले ऑपकोड फेच ये सिग्नल चालू होगा। तो ऑपकोड फेच में हम लोग क्या करने वाले, हमको पता है यहाँ पे 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगे, T1 T2 T4। ये क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ऑपकोड है दैट इज 06H, ये ऑपकोड है MVI B का। तो ये ऑपकोड हमारा जो मेमोरी लोकेशन में लिखा होगा, जो भी मेमोरी लोकेशन में हमने प्रोग्राम लिखा है, जैसे 600 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 600 पर पहला हम लोग ऑपकोड क्या लिख रहे हैं, 06। तो अब ये 06 कहाँ पर आया है, डेटा पर आया है। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर सब बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये भी दिखाया, देखिए 20H और 00। सो प्रोग्राम जो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इट इज रिटन इन 2000, राइट। ये वाले मेमोरी लोकेशन पे प्रोग्राम लिखा है। तो 20H is taken on the higher order address bus and 00 is taken on the lower order address bus, that starts from AD0 to AD7, right। तो यहाँ पे पहले क्लॉक बस में एड्रेस लैच एनेबल हाई हो जाएगा, एड्रेस डेटा बस एड्रेस जैसा काम करेगा, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेज दिया। अब डेटा जो है दैट इज 06 is taken on the data line and that is being fetched, that is being taken to the instruction register। ये डिकोड हो गया है ये 4 T स्टेट्स में। इसके बाद का इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, अभी एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा दूसरा साइकिल चालू होगा
जिसमें हमको फिर से 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगे, T1, T2 और T3। मतलब अब टोटल साइकिल कितने हो गए? 7। 4 हो गए ऑपकोड फेच करने के लिए, और 3 जो है दिस इज टू रीड द डेटा फ्रॉम द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन and to store it to the register B. So if you are able to see over here in the first cycle of memory read, 20 और 01 ये जो एड्रेस का मेमोरी लोकेशन है ये चलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2000, राइट? यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था 06, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में क्या लिखा है? 43। तो 2001 ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर क्या आने वाला है? हमारा डेटा 43, और एड्रेस क्या रहेगा? लोअर ऑर्डर एड्रेस रहेगा हमारा 43, सॉरी लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या रहेगा? 01, और जो डेटा है दैट इज 43। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 और 01 आ गया है पहले क्लॉक पल्स में, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का कंट्रोल सिग्नल चेंज हो गया, ये 0 हो गया है, S1 1 है, S0 1 है, which implies that we have to read from the memory। और जैसे ही ये यहाँ पर रीड सिग्नल जो है ये लो हो जाता है, तो डेटा इज बिंग read from the memory location 2001, that is 43H, and that is being loaded in the register B। So ये complete जो है, this is actually how a microprocessor works when the data is to be stored from that program to the some temporary register, right? Now in this case we have tried to store the data from the memory location or from the program to the register B। तो ये पूरा का पूरा जो टाइमिंग डायग्राम है, this टाइमिंग डायग्राम gives you the best example to understand how a instruction, how a single instruction is been executed। अब मान के चलो कि MVI B के जगह पर हम लोग बोलते कि मूव या स्टोर द डेटा डायरेक्टली टू द मेमोरी लोकेशन। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यूज करते तो ये जो 4 ऑपकोड फेच है ये जैसे के वैसे रहते, और इसके बाद जो ये 3 रहते इसमें हम लोग क्या करते? मेमोरी राइट का काम करते, यानी अब मेमोरी का डेटा जो है वो लिखने का काम करते, राइट? मुझे लगता है ये आपको समझ में आया है। ये एक है, ये हम लोग इसको कल देख लेंगे। इसमें स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट है STA, इसमें फिर से वो चार क्लॉक पल्स लगेगी, और फिर ये हमारे बाकी के 3 लगेंगे। इसमें हमारे को मेमोरी रीड करना है, और उसके बाद हमारे को मेमोरी रीड करना है और मेमोरी राइट करना है, राइट? तो ये मैं आप लोगों को कल बताने वाला हूँ। सो यहाँ तक कि आप समझ लो आज के लिए काफी है, और इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी ऑन दैट। Kindly go on asking some queries. Unless and until you ask queries, you won't be able to understand, right? So I am stopping to share my screen now. Hello, yes, if you have any queries, you can put it on chat box. Even you can put it on the comment of my YouTube channel. YouTube, I'm uploading this video also on the YouTube, and if you have any queries, you can ask me. Right now, you can ask me. By that time, I am ending this lecture. Thank you very much for joining. Please do share your thoughts and views and comments on the YouTube channel, and like this YouTube channel. Thank you very much. Have a nice time. Take care. Stay home. Stay safe and stay healthy. Good day.